in this online class the students of class 5, the subject English grammar. My dear students, in English grammar, the most important chapter is sentence. सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं. प्रॉब्लम is the question is the what is sentence. In the answer of this question, you can answer that a sentence is a group of words which gives complete meaning. A sentence is a group of words which gives complete meaning. इसका अर्थ हुआ वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है. The statement of any person is called sentence. So my dear students, I have given the definition of sentence. Now you can watch on this blackboard that how many types of sentences are. How many types of sentences are यानी कि वाक्य के कितने भेद होते हैं. This is the most important question. Now we are going to deal the how many types of sentences are. According to English grammar, a sentence has 5 main parts. The one assertive sentence, the second imperative sentence, the third interrogative sentence, the fourth exclamatory sentence, and the last one is called optative sentence. And you must have to know that how many kinds of assertive sentence, how many parts of assertive sentence. According to new modern English grammar, a assertive sentence has also been divided into 2 parts, and they are known as affirmative sentence and negative sentence. Affirmative sentence को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव वाक्य कहते हैं. यहाँ आइए सबसे पहले ऊपर में असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में सरल वाक्य, सामान्य वाक्य कह सकते हैं. ये आपका दूसरे नंबर में जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसको आप जो है आदेश सूचक वाक्य कह सकते हैं. तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको आप प्रश्न सूचक वाक्य कह सकते हैं. चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको आप विस्मयादि बोधक वाक्य कह सकते हैं. और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम भी इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं. और नीचे अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जो असर्टिव सेंटेंस के जो 2 पार्ट हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इसको हम सकारात्मक और नकारात्मक के नाम से क्रमशः जानते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी मस्ट हैव टू डिफाइन all sentences one by one. At first we shall define the assertive sentence. Now you can write it on your notebook. Now you must have to write it on your notebook, the definition of assertive sentence. The assertive sentence is a sentence which has one subject and one finite verb, or main verb and one object, which declares very simple meaning. हिंदी में सामान्य वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है जिसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है और एक कर्म होता है. उसको हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं. जैसे कि राम इज ए बॉय, सी इट्स ब्रेड. ये सारे सेंटेंस जो है सो असर्टिव सेंटेंस के कहलाते हैं. The second one is known as imperative sentence. Imperative sentence is a type of sentence which declares the sense of order, request, suggestion and advice, and sometimes it also declares the meaning of command also. यानी कि हिंदी में आप कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस वैसे वाक्यों को कहा जाता है जिससे किसी को आदेश देने का भाव, किसी से अनुरोध करने का भाव, किसी को सलाह देने का भाव, किसी को निर्देश देने का भाव प्रकट होता है. उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस की एक सबसे बड़ी विशेषता है the most powerful quality of imperative sentence is that it always begins with any main verb, and the subject of the imperative sentence is always hidden, which is known by you. इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा छिपा हुआ रहता है. यह किसी मुख्य क्रिया के द्वारा प्रारंभ किया जाता है और इसका सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा यू होता है. जैसे यू मे गो नाउ, you here, come here, sit down, stand up on the bench, come here.
take medicine on time, etc. The third is interrogative sentence. Interrogative sentence को हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं. This sentence is used to ask any question and to make any type of inquiry. It always begins with any interrogative word. Sometimes an interrogative sentence always begins with any helping verb. Suppose that, जैसे do you know it? Are you poor? Is it clear? Is it your? या नहीं तो आप कह सकते हैं what is your name? Where does she live? What is this? Etc. Now the fourth sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentence को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. This such type of exclamatory sentences declares the sense of surprise, and such sentences are begins with what and how. जैसे what a place, how slowly she walks. Such sentences are called exclamatory sentence. ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं जिससे आश्चर्य और विस्मय का भाव प्रकट होता है. The fifth and the last one is optative sentence. Optative sentence always expresses the sense of wish, command, blessing, curse and direction. Our optative sentence always begins with may, and in the last of the optative or exclamatory sentence there is a sign of exclamation also. So it is called optative sentence. जैसे may you go now, may you sit down, may God bless you, may you live long, may he die. Such type of sentences are called optative sentence. Now we have to define the last one. Assertive has two parts, affirmative and negative. तो affirmative में आप कहेंगे सकारात्मक वाक्य. वैसे सारे वाक्य, all those such type of sentences which has the symbol of yes, yes, it is called affirmative sentence, and the sentence which has the symbol of no, no, that is called negative sentence. यानी कि आप कह सकते हैं कि वो सारे वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थ प्रकट होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जो नेगेटिव सेंस को प्रकट करता है उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, this is the last part of this today's lesson. We shall repeat it again class.